नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञान है और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश पाठशाला। सो टुडे आई जस्ट टेक अ वेरी शॉर्ट क्लास और यू कैन से अब बहुत ही संक्षिप्त मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक टिप्स जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, क्या चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए और व्हाट आर लाइक बेसिक क्वेश्चंस दैट अ इंटरव्यूअर कैन आस्क यू when you are into like a small session or a brief introduction session, right? So to begin with, first thing what I believe, first of all, आप जैसे ही रूम में एंटर करें जहाँ इंटरव्यूअर बैठा हो, आप ये चीज़ बहुत ध्यान रखें कि आपने एंट्री कैसे ली है, राइट? एंड हाउ कंफर्टेबल यू आर फीलिंग। दिस इज द फर्स्ट थिंग। जो सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है वो इन सब छोटी छोटी बातों पे बहुत ही ध्यान देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए एट मोस्टली लाइक टाइम्स द डोर्स आर क्लोज्ड एंड इंटरव्यूअर इज सिटिंग इनसाइड अ केबिन और अ रूम, राइट? सो एज अ लाइक नाउ पीपल वुड प्रिफर और पीपल वुड से दैट कि एंटर करते समय इट्स नॉट मैंडेटरी टू आस्क लाइक मे कम इन। इट साउंड्स very childish, but no, that is incorrect. As a you can say as a kind of a you can say that should reflect in your own personality how you are presenting the things, right? So find a very you can say okay, find a way from a scratch. Okay, so start the things from scratch, whether it sounds kiddish or childish, anything, right? सो पहले जब आप एंट्री करें, पहली चीज तो आप बहुत ही ध्यान दें कि आपने एंट्री की है वेरी पोलाइटली यू कैन से और आस्क फॉर परमिशन टू गेट इनसाइड द इंटरव्यू रूम, राइट? सो वंस यू आर इनटू द रूम, मेक श्योर आप जब चेयर ड्रैग करें जहां आपको बैठना है, दैट डजंट साउंड, मतलब जबरदस्ती खींच के आवाज करते हुए ट्राई टू पुल द चेयर आउट, और अगर वो बाहर है तो आराम से बैठे और ट्राई टू पुल द चेयर आउट विदाउट एनी एक्सटर्नल नॉइज। ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि अगर आप मतलब चेयर पे बैठ रहे हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं, बट जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स, राइट? नाउ लेट्स दीज आर द बेसिक थिंग्स व्हाइल एंटरिंग द रूम। नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट द इंटरव्यूअर कैन आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स अपॉन किस तरह का इंटरव्यू देने जा रहा है। सो टुडे आई विल बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द इंटरव्यूज इन अ कॉल सेंटर और अ BPO, right? So we'll talk about the call center or a BPO, and then however the first round remains same for everyone. चाहे आप कॉल सेंटर के इंटरव्यू में जाएं, चाहे आप किसी भी टेक्निकल इंटरव्यू, the first HR round or introduction round you can say that remains same for everyone. Okay, so let's talk about the basic questions that interviewer asks you. Okay, so the first thing, like as soon as you hand them over your resume, or एक शायद सॉफ्ट हार्ड कॉपी उनके पास पहले से होते, बट स्टिल दे वुड आस्क यू दैट टू गिव योर रिज्यूमे. सो वंस यू हैंड ओवर द रिज्यूमे टू द इंटरव्यूअर, द फर्स्ट क्वेश्चन or you can say in brief, the interviewer would ask you, okay, walk me through your resume. Now first let me tell you what is the exact meaning of this. Walk me through your resume or tell me something about yourself. This is something that would happen, or this is a kind of question that would normally come again and again. So the first question that an interviewer asks you is something like you need to tell him, or you can say the first question that he or she would ask you, like walk me through your resume. Okay, so again questions different type के होंगे, आपके आंसर सिर्फ एक ही होगा, वो मैं बताऊंगा. पहली चीज, walk me through your resume, tell me something about yourself, or you can say any further question जो आपको याद में है, जहन में. आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं. अगर इंटरव्यू ने ये क्वेश्चन पूछा तो उसका क्या आंसर होगा. सो फील फ्री टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन. आप हमारे YouTube चैनल के लिंक पे जाएं, वहां पे कमेंट करें, एंड वी विल श्योरली ट्राई टू गेट अ न्यू वीडियो. और अगर आप पर्सनली भी कुछ टिप्स लेना चाहें या कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेरी दैट यू फील, हम फेसबुक पेज, देन वी हैव, फिर हमारे पास फेसबुक पेज है, आप यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. और उसके साथ ही साथ आप अगर चाहें तो
मैं इंस्टाग्राम का एक टेलीग्राम का एक एजुकेशनल ग्रुप फॉर्म करने वाला, यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल. सो देयर इज नो चार्ज फॉर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एनीथिंग, बट अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो आई लेट यू नो. ओके. और अब हम हाल ही में एक प्रोग्राम और स्टार्ट कर रहे हैं, कंबाइनिंग इन कोलेबरेशन विद इंग्लिश पाठशाला. लाइक हम लोग अभी एक डिजिटल सर्विसेज है उनके साथ कोलेबरेट कर रहे हैं, जहां पे इट्स कोलेबरेट. सो जहां पे हम जो है उनके साथ मिलकर के इंग्लिश का जो सेशंस है वो हम लोग कंडक्ट कराएंगे. बाकी उनका रोल रहेगा, अगर आप बीपीओ में इंटरेस्टेड हो, सो दे वुड प्रिपेयर यू फॉर अ बीपीओ सेक्टर, वेयर इन वो पूरी आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि स्पोकन इंग्लिश, देन उनका कंप्यूटर लाइक टाइपिंग टेस्ट, और फिर कॉल्स का पूरा डेमो एक तरह से, मतलब इट वुड बी अ काइंड ऑफ ड्रेस रिहर्सल और यू कैन से, और उसमें वो लाइव कॉल्स पे भी आपको ले जाएंगे. सो वी आर ऑलरेडी इन कन्वर्सेशन विद देम, सो होपफुली द थिंग्स वुड वर्क एंड वी वुड स्टार्ट दैट एज वेल, राइट. तो चलिए बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे. सो इंटरव्यू क्वेश्चन में पहली चीज जो मैंने क्वेश्चंस बताया, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट विद थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ समवन आस्क यू वॉक मी थ्रू योर रिज्यूमे, सो बेसिक चीजें याद रखिए. उसमें सबसे पहली चीज आप अपना नाम बताएंगे, यू हैव टू टेल योर नेम, और आपकी एजुकेशन, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, या अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसको भी बारे में यू कैन एट द लास्ट यू कैन यूज दैट आई एम परस्यूइंग. और नेक्स्ट, इफ यू आर एन एक्सपीरियंस होल्डर, सो अपने जॉब के बारे में बताएं. एंड अगेन, अगर जॉब का एक्सपीरियंस अगर आपके पास, इफ यू हैव 3 to 4 जॉब एक्सपीरियंस, तो स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. लाइक जो अभी करंट जॉब वो सबसे लास्ट में बताया, दैट आई एम स्टिल वर्किंग इन दिस कंपनी एंड आई एम सर्विंग अ नोटिस पीरियड, और जो भी है दैट्स अप टू यू, वॉट एवर यू. सो ये होने के बाद, और हाँ, दूसरी चीज, लाइक नॉर्मली जब आप ये सब बताते हैं तो फैमिली बैकग्राउंड, आई लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट फैमिली बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जो भी आप दें बहुत ही डिटेल में ना जाए, राइट. सो मेक श्योर दैट यू जस्ट टेल the interviewer that we are 5 to 6 members in a family, or we are a family of 6 members, right. And then you can very smoothly move on to the next. अगर उसको कुछ पूछना होगा, then he would cross question you, but again don't try to get into too depth, because पहली चीज वो interviewer है, he is not bothered about your family, he is not bothered about the names of your family. The main motive is to get to the technical round. ये जो basic HR round होता है, that is just to check your communication, that yes, whether you are eligible or whether you are good enough to move to the next round to talk to the operation manager or something like that, right. So this is something that you need to make sure that you go through very slow process. And again, sentence को कभी भी lengthy मत करें, form very small and short sentences. That would make sure that your interview would go well, and the probability of making mistakes are very less. तो ये चीजें जब आपने अपना नाम, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपना जॉब एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें बता दी, then you can briefly talk about your hobby. And again, one very important, हॉबीज में जैसे कि शुरू से, हालांकि सबको ये पता होगा, बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डे वन आई हैव बीन टेलिंग इन ऑल माय सेशंस, डोंट ट्राई टू टेल समथिंग दैट यू डोंट डू, बिकॉज जो इंटरव्यूअर वहां पे उनको सच और ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद होती है. सो डोंट टेल एनी हॉबी दैट यू हैव नॉट इवन लाइक थॉट अबाउट, राइट. If you don't have a hobby, just straight away be very practical and say that, sir, I'm sorry, I do not have any hobby, but yes, at times I love to watch cricket. That's it, right? If you do not have any hobby, or if you have not like inculcated any hobby in yourself, so this is how you're going to speak, right? Now the next is अब hobby बताते हैं. So try to tell playing cricket or reading books. हाँ, reading books पे बहुत सारी इंटरव्यू क्वेश्चंस में ये रीडिंग बुक्स जिसने बोल दिया, मेक श्योर यू आर genuinely reading books, your hobby is genuinely reading books, because this is where people get stuck. बोल देते reading books or watching like documentaries and all those things. So don't tell any of these kind of things if you're not into that, right? Now जब ये सारी चीजें आप बता देते, then at last you can, when you summarize the things,
you can very politely or very in very sophisticated manner you can tell, thank you so much, sir. This is all about me. This is, or you can say this is a brief introduction about me, and that is all. Thank you so much, sir. So अब उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होगा, होपफुली जहां तक वो वहीं पे एंड कर देगा. अगर उसके पास क्रॉस क्वेश्चन होगा, वट एवर यू हैव टोल्ड मी, ही और शी वुड श्योरली आस्क यू, बट this is what you need to tell. Don't go in anything very don't take any topic or anything at very you can say in very depth. That is what I mean to say. बाकी next video जब हम prepare करेंगे उसमें I'll conduct you can say a demo interview session between two people. That would be a great example, or you can say the great learning for you people who are trying to get into interviews. And अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है बीपीओ सेक्टर में, प्लीज डू लीव योर नंबर और योर comments. Will surely get back to you and will train for spoken English, and along with that we will train and like prepare you for job interviews. And also if you are trying to get into a BPO sector, then we will get that as well done for you. So this was all about like the basic tips or the basic things that you need to remember while you are sitting in an interview. Thank you so much. So उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई. So please leave comments, any feedback that you have or anything that you want to improve. Please feel free to leave your comment. And also if you find that this video has given you something to learn, please do like and subscribe the video. Thank you so much.